Assalamu alaikum, dear students, class 5th. Today we are going to read the lesson Gulliver Among the Little People, paragraph number 5th. It was a tiny man, only 6 inches tall. ये एक छोटा आदमी था, only 6 inches tall, सिर्फ 6 इंच लंबा. In a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body. कुछ ही देर में दर्जनों छोटे आदमी गुलिवर के जिस्म पर चल रहे थे. And there were many more around him. और बहुत सारे उसके इर्द गिर्द थे. Some among them carried bows. उनमें से कुछ लोगों को तीर कमान थे. And arrows और तीर थे. Gulliver was in Lilliput. गुलिवर लिलिपुतों में था. The country of tiny men, छोटे लोगों की का मुल्क. He wanted to get up. वो उठना चाहता था. He said to himself. उसने खुद से कहा. These strings are not thicker than threads. ये रस्सियाँ धागे से ज़्यादा मोटी नहीं हैं. I can easily break them and free myself. मैं आसानी से इनको तोड़कर अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ. He broke one or two springs. उसने एक या दो रस्सियाँ काटी. And was able to move his left arm. और इस काबिल हुआ कि ये अपना बायां बाजू हिला सके. A little थोड़ा सा. He tried to catch some of the little men. उसने कुछ छोटे आदमियों को पकड़ना चाहा. But they all slipped through his fingers and ran away. मगर वो उसकी उंगलियों से फिसल कर चले गए और भाग गए. Then there was a loud shout. फिर वहाँ पर loud shout and little arrows came and hit Gulliver all over his body. तब बहुत शोर हुआ और कुछ तीर गुलिवर के बॉडी पर आकर लगे. गुलिवर के जिस्म पर आकर लगे. They were sharp and painful. वो बहुत तेज थे और बहुत दर्द भरे थे. Gulliver said to himself. गुलिवर ने खुद से कहा. These arrows are very painful and won't try to break any more strings. ये तीर बहुत तकलीफ दह हैं और I want to break any more strings. मैं और रस्सियाँ नहीं काटूँगा. But how can I free myself? मगर मैं अपने आप को आज़ाद कैसे करूँगा. Gulliver lay there quietly and did not move for a long time. गुलिवर बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा और अपने आप को हरकत बहुत देर तक नहीं दी. Now the tiny man did not shoot any more arrows at him. छोटे आदमियों ने और कोई तीर नहीं चलाया उस पर. They made a platform near his head. उन्होंने एक प्लेटफार्म चबूतरा बनाया उसके सर के नज़दीक. Several of them climbed on the platform. बहुत सारे उस प्लेटफार्म पर चबूतरे पर चढ़े.
and one of them spoke, اور ان میں سے ایک نے کہا, but Gulliver did not understand the tiny man's words, مگر گلیور ان چھوٹے آدمیوں کی باتیں نہیں سمجھتا تھا. Gulliver was very hungry and thirsty, گلیور بہت بھوکا اور پیاسا تھا. He made some signs for food and drink, اس نے کچھ اشارے کیے کھانے اور پینے کے لیے. They understood his signs, انہوں نے اس کے اشارے سمجھ لیے. And brought him baskets full of tiny loaves of bread, انہوں نے بہت سارے ٹوکریاں لائی جن میں روٹیاں یعنی کہ بریڈ تھے. اینڈ ٹینی فروٹ, چھوٹے چھوٹے میوے تھے. گلیور ایٹ 2 or 3 loaves at a time, گلیور نے ایک ساتھ 2-3 ٹکڑے منہ میں ڈالے. Then they brought him water in tiny tubs, تو تب انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹبوں میں پانی لایا. He drank it and then went to sleep again, تب اس نے پیا اور وہ پھر سو گیا. The man who then went to their king and said, تب وہ آدمی اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا, there is a giant near the seashore, وہاں سمندری ساحل پر ایک دیو ہے. He was sleeping, وہ سویا ہوا تھا. And we tied him to the ground, ہم نے اسے زمین کے ساتھ باندھ دیا. What shall we do with him, ہم اس کے ساتھ اب کیا کریں گے. اچھا, کل دوسرا حصہ اس لیسن کا ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.